नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और हमें नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा किसके साथ? आपके साथ। प्रोग्राम शुरू करने के पहले, मतलब बातचीत शुरू करने के पहले, प्रोग्राम तो नहीं कह सकते इसको, सिर्फ बातचीत ही कहेंगे। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप ज़रा सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर ज़रा बेल आइकन के ऊपर ज़रा प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें प्रोग्राम को अगर आपको पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने जो कमेंट हैं ज़रूर दें। प्रदीप जी, शरद पवार जी को मिलने आज एकनाथ शिंदे जी भी गए। बिल्कुल सर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी गए, उद्धव ठाकरे जी तो गए ही, लेकिन एकनाथ शिंदे जी गए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, वार्डन रोड के ऊपर है। यस। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के में मिलने को गए एकनाथ शिंदे जी। और एकनाथ शिंदे ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हैं हर जगह पे कि देखने वाला अचंभित हो जाता है कि आज ये आदमी आज गढ़चिरौली में, कल कहीं श्रीरामपुर में, कल कहीं और, परसों कहीं और, फिर शिरडी में, उसके बाद परली में, उसके बाद ठाणे में, और उसके बाद मुंबई में। मतलब वो आदमी जो है उसने तय कर लिया है एकनाथ शिंदे जी ने कि ना मैं सोऊंगा ना सोने दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ सर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने में कोई उसके हाथ पकड़ नहीं सकते। एंड प्रोबेबली ही इज 2 steps ahead of शरद पवार, वेयर कंफ्यूजिंग द पीपल इज कंसर्न्ड। और यू नो एवरीबॉडी इज कीपिंग वेटिंग कि अभी क्या होने वाला, अभी ये किधर जाने वाला है, अभी किससे बात करने वाले। ही इज ऑलवेज मूविंग ऑन द मूव, और कोई मौका नहीं छोड़ता है, चाहे जो उत्सव भी हो, गणपति मंडल हो, दही अंडी मंडल हो, कोई भी हो, कोई मौका नहीं छोड़ता है। But he's amazing. He's really रोड amazing. में अगर आग लगता है, ये सौ अगर लोग He was right there. उधर गाड़ी खड़ा करता है और वहाँ से बोलते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहुँचा कि नहीं, और रास्ते में जा रहे कुछ मालूम पड़ा कुछ मिसहैप हो गया, वहाँ कलेक्टर को फ़ोन कर लेते हैं। आई मीन whatever he's done, he's not resting for a minute, always working, and it was very nice to full see, of energy. And just the other day, yesterday, I think it was very nice to see our friend Mr. Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister, and his wife, and his absolutely charming wife, Amrita Fadnavis, doing the Fugdi. बिल्कुल। मतलब अरे ज़बरदस्त, wonderful. It was really wonderful to see. I have never seen Mr. Devendra Fadnavis enjoy himself so much. He seems to be quite relaxed. मतलब We never saw any chief minister, deputy chief minister. Means मैं तो देखा नहीं फुगड़ी करते हुए। फुगड़ी करते हुए आज तक कभी नहीं देखा। ना शरद पवार को फुगड़ी करते देखा, ना विलासराव देशमुख was the most cheerful of these chief ministers. But I have never seen him do that. We never saw him doing fugdi, and especially accompanied by wife everywhere. Yes. First chief minister, deputy chief minister, who has his wife everywhere with him. His wife is everywhere with him, which is wonderful. And they're taking part in every program. That's right, which is really and truly wonderful. Yes, absolutely wonderful. Yes. And I must say that Mr. Devendra Fadnavis, congratulations, sir. You seem to have lost a lot of weight. He was looking very slim. I mean, I hope all these guys in all the Marathi channels, they stop showing his old footage. Bilkul. You know, the new Mr. Fadnavis is now looking slim and trim. He's looking very healthy, very slim, and with it. That's the most important point. But the fact is, the way in which the Chief Minister is working right now is absolutely amazing. It's really and truly amazing. It's magnificent. He is working 24/7. I think he goes to sleep for less than 2 hours. मुझे लगता है कि 2 घंटे से कम सोते होंगे शायद. He never leaves an opportunity. And पिछले 2 दिन में जिस प्रकार से Mr. Modi announced 2 lakh crore worth of projects in Maharashtra. 2 lakh crores worth projects in Maharashtra. कल रोजगार मेला था, उसमें 75,000 एप्लीकेंट्स को उन लोग ने जॉब नोटिस दे दिए कि यू आर एम्प्लॉयमेंट। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर गोइंग ऑन द फास्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। 14,000 crores वर्थ मनी कमिंग ओनली टू द अर्बन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विच इज हेडेड बाय द CM। तो lot of things happening in Maharashtra where development is concerned, and he has answers for everything. जैसे कहा कि whatever ये 3, 4 या 5 प्रोजेक्ट जो आप बोलते हैं, फॉक्सकॉन है, टाटा एयरबस है, सैफरन है, मेडिकल पार्क है, ड्रग पार्क है, इन सब के एक वाइट पेपर मैंने निकाल दूंगा, RTI के माध्यम से लोगों को जानकारी दूंगा कि ये किस लिए ये प्रोजेक्ट्स देश के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर चला गया। एंड वी आर सेइंग इन 3 months इंपॉर्टेंट डिसीजंस। 2 months में उन्होंने कहा 700 के ऊपर डिसीजन लिए, एंड सम 72 मेजर डिसीजंस दैट अफेक्ट्स महाराष्ट्र डेवलपमेंट, दैट positively affects Maharashtra development. So itna confidently, and then he went on to tell again why he broke up with Uddhav Thackeray. जी.
जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे जी के सपने जो थे, आज बहुत जबरदस्त तरीके से जिस प्रकार से बोला आर्टिकल 370, बाला साहब ठाकरे जी बोला कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनने दो, आप बन के दिखाओ, मैं आर्टिकल 370 एक दिन में बिल्कुल यस वापस लूंगा, but I will revoke it. Mr. Modi and Mr. Shah did it. That's what Eknath Shinde ji is telling. The CM today is telling the whole Maharashtra and India why he broke up. He says it was Bala Saheb Thakre's dream that Article 370 has to be revoked. Kashmir, an integral part of India, that's right, undisputed. That was achieved by Modi and Amit Shah. And then second, he said, second most dearest thing to Bala Saheb Thakre was Ram Mandir. It's been built. It's been built. बन गया है. बोले किसने किए? जी. ये मोदी जी और अमित शाह ने किए. तो बाला साहब का सपने किसने फुलफिल किए? मोदी और अमित शाह ने. बिल्कुल. What we always mutually discuss, एक भी दिन जाता नहीं है जब एकनाथ शिंदे मोदी जी और अमित शाह के गुण जो गाते हैं जी, जो एक ही नहीं, it is not that they have not worked, he is always praising and telling that how close he is to them and how close they are to the objectives and ideals of Bala Saheb Thakre. Absolutely. तो बोले कि जो बाला साहब ठाकरे का सपना फुलफिल किया, हम उनके साथ रहे या जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे जिंदगी पर लड़े उनके साथ जुड़े. लेकिन यहां पर प्रदीप जी, भले ही पार्लियामेंट के अंदर विरोध ना किया हो, लेकिन आर्टिकल 370 के बारे में, आर्टिकल 370 के रिपील के बारे में जो वक्तव्य दोनों एनसीपी और कांग्रेस से आए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशभक्त को ऐसे वक्तव्य देने चाहिए थे. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वेदर इट इज मिस्टर गुलाम नबी आजाद who was then in the Congress, and by the way he was LOP. Yes, बिल्कुल sir. He was leader of the opposition at that time. तो आप मतलब इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना, इस किस्म की बात करना, मतलब जो महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं वैसी भाषा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? जो पाकिस्तान की भाषा है जी, वही भाषा आप इस्तेमाल करो यहाँ पर. तो what is, so he today clearly said that मैं क्यों नहीं करूँ जो सब बाला साहब ठाकरे जी के सपने कौन फुलफिल किया है? हम लोगों ने. और लोगों से हम क्या करेंगे 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद जब लोगों से फिल्म मिलेंगे तो लोगों ने यही पूछेंगे हमको, हमने दोनों को वोट किए, एक तो मोदी जी और बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर को साथ में वोट दिए, आप क्या किए? आपने हमारे वोट का निरादर किया, गलत इस्तेमाल किए. तो ये बोले कि ये दिस वाज प्रोबेबली अमंग ऑल द पार्टी MLAs ऑफ द शिवसेना, दैट्स व्हाई मेजॉरिटी. और बोले कि 40 में 50, 54 में से 40 निकलना, उसको गद्दारी कहा कहते? दैट इज एन अपराइजिंग, अ रेवोल्यूशन. दैट्स अ स्प्लिट. यस, दैट्स अ स्प्लिट. यस. और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर मैं कितनी मर्तबा यहाँ पर बोल चुका हूँ, नॉट दैट एनीवन लिसन्स टू मी, व्हाई शुड दे? परहैप्स इट इज टाइम फॉर मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड मिस्टर आदित्य ठाकरे, बिल्कुल सर, कि आप इतना क्रिटिसाइज करना बंद करें. खोखे की सरकार, 50 खोखे की सरकार, ये सरकार, वो सरकार, गद्दारों की सरकार, मतलब वो क्या है, वो अली बाबा और 40 चोर वगैरह वगैरह, वो सब बोलना बंद करें. क्योंकि एकनाथ शिंदे वो शख्सियत है, जब उन्होंने कहा है ना वो व्हाइट पेपर निकालेंगे कि ये फॉक्सकॉन बाहर क्यों गया, टाटा एयरबस बाहर क्यों गया, उसमें जब एक एक चीज़ सामने आएगी, याद रख लीजिए आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है. फिर क्या करोगे? सिंपल बात है, फिर क्या करोगे? सच का सामना करने की आप में क्षमता है या नहीं है, ये आपको तय करना है. क्योंकि एकनाथ शिंदे वो शख्सियत नहीं है कि उसके खिलाफ आप गाली दें और वो गाली सुन ले बड़े प्यार से. ही डज नॉट टर्न द अदर चीक. वो दूसरा गाल दिखाने वाला शख्स नहीं है. आप उसको अगर थप्पड़ मारेंगे तो वो ना जाने क्या कर देगा आपका, याद रख लीजिए. He is an action man, sir. He is an man of action. और बार बार वो लोगों को समझा रहे कि देखो, पेशेंस एंड टॉलरेंस का एक लिमिट होता है, मतलब सहनशीलता का एक लिमिट होता है, उसके पार जाओगे तो आपको भुगतना पड़ेगा. अभी भुगतना पड़ेगा. यस, सिंपल बात है, बिल्कुल साधारण बात है, भुगतना पड़ेगा. और सर जिस प्रकार से आज कांग्रेस जिस इश्यूज उठा रहे हैं, दे हैव कॉट द मोदी गवर्नमेंट, ये दिखा के लोगों को कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरेटेड PSUs. मिस्टर मोदी हैज नॉट जनरेटेड इवन 1 PSU, बट करीबन 20 से 26 बेचने के लाइन में, वेटिंग लिस्ट में जी खड़े हैं. करेक्ट. सो आपके ज़माने में गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गए,
परमानेंट जॉब्स कम हो गए और कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज्यादा हो गए। दुरुस्त बात है, उसमें गलत तो नहीं है। So these are the points actually. But where the Congress... But times have changed. Times have changed. Yes, what exactly. do you do? No, times have changed. Yeah, at one time, the only jobs available were government jobs. Bilkul, sir. If you remember, during that time, when your father, my father, you know, they were all growing up, everybody's ambition was to get a government job. Exactly, sir. So that you'll get a pension after retirement and so on and so forth. But now India has changed. India has changed. India has become entrepreneurial. Bilkul. Everybody wants his own business. Everybody wants his own startup. Everybody wants his own angel investor to come in over here and to invest in his startup. Everybody wants a Google for himself. Bilkul. Let's be very clear. Yes. That is the new India. वो नया हिंदुस्तान है। तो जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर सरकारी नौकरियां कम हुई हैं तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी, अपवर्डली मोबाइल हिंदुस्तान नहीं है। एक चीज जो जहां पर दोनों, या मुझे ये बात करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों सहमत हैं एक बात से कि इंस्टेड ऑफ आप नौकरी मांगने के बजाय आप नौकरी क्रिएट करें, आप नौकरी दीजिए। बिल्कुल सर। आप अपना कारोबार शुरू कीजिए, अपना व्यवसाय शुरू करें। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि आज तक तो सिर्फ एक ही लॉलीपॉप होता था सरकार के पास, 2 लाख नौकरी हम दे रहे हैं, 10 लाख नौकरी हम दे रहे हैं, सीधी सादी बात है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर मोदी जी ने एक बार नहीं ना जाने 1000 बार कहा है, क्या कहा है कि मैं एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। And it is absolutely true, by the way. The Ministry of Skill Development and the Small, Micro and Medium Enterprises under Mr. Narayan Rane. नारायण राणे साहब का जो मंत्रालय विभाग जो है, सीधी सादी बात है, वहाँ पर न जाने कितने लाखों लोगों को मदद हुई है कि आप अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करें, छोटे लघु उद्योग आप शुरू करें। अरे जब तक लघु उद्योग शुरू नहीं होंगे हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता, सरकारें विकास नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट बना सकती है, वातावरण बना सकती है कि आप विकास के मार्ग पर चलें। Exactly. The government's role is to create a business atmosphere, create an atmosphere conducive for business to prosper, to create opportunities. And that is what Mr. Modi is doing. अभी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 2 lakh crores investment for projects in Maharashtra, and now 14,000 crores specially given to the Urban Development Ministry. Maharashtra is in the lens. So that is trying to compensate whatever projects has gone away from Maharashtra for whichever government's fault, whoever was in power at that particular time. He is compensating for that, and he's telling development karo. Second thing, when it comes to Mallikarjun Kharge, he's become a Twitter expert. Twitter में ही जो 8 संकल्प है गुजरात के लिए, जिसमें includes electricity, water, hospitals, creating permanent jobs, शेतकरी loan to be wiped out, farmers. तो अलग-अलग 8 संकल्प जो लिए, जैसे हमने कहा कि कल भी taken out of केजरीवाल, कट एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट फ्रॉम महामंत्री पार्टी। 300 यूनिट हम छोड़ देंगे जी, 10 लाख तक हेल्थ, व्हाई नॉट 400 यूनिट्स, व्हाई 300 यूनिट्स। So they are slowly going into the mode of elections where Gujarat is concerned, the Congress. But how, this is what we were discussing yesterday, कैसे जाएंगे? Where CM candidate of Aam Admi Party has already been announced by Kejriwal. Yes. Kejriwal is neck on neck with the BJP was concerned, with the BJP campaign spearheaded by the Prime Minister himself. Yes. Aam Admi Party, Kejriwal has been consistently campaigning in Gujarat. Along with Bhagwan Mann. And Manish Sisodia. Yes. And Saurabh Bhardwaj. And Atishi Marlena. Everybody. Bilkul, sir. So how are you going to, what is going to be the Congress next step? I never heard Rahul Gandhi speaking anything about Gujarat. Nothing. उनके कुछ comments आए नहीं। मल्लिकार्जुन जी का ट्विटर रिमार्क्स है, ऑन द फील्ड व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट द कैंपेन ऑन द फील्ड, बिकॉज यू नीड टू एड्रेस लोकल इश्यूज। ये तो आपने जनरल आपके 8 संकल्प बोल दिए, मे बी 1 week बिफोर द वोटिंग। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। हो सकता है। राहुल गांधी इज एंजॉयिंग हिज भारत जोड़ो यात्रा। जी बिल्कुल, इट इज फैंटास्टिक। ही इज मिक्सिंग अराउंड द क्राउड, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, वृद्ध लोग सब जोड़ के एक जबरदस्त माहौल वो बन रहे हैं। बट you know, in life you need to have your immediate goals as well as long term planning, short term planning, सब होता है। short term planning यहाँ पर सर गुजरात में कुछ दिख नहीं रहा है। Not only that, yesterday after the Congress threat, the local threat,
where they said that the way Sharad Pawar has behaved with the MCA elections, we have to rethink our alliance, whether we are going to be a part of the MVA. Yes. Now, this entire concept, what is going to happen in Maharashtra, the Congress leadership in the center has not taken any view on that. They are not even concerned, not bothered. Are they even monitoring the day-to-day events, what is happening in Maharashtra? And which is the central leadership? By the way, that's what I would love to know. However, before we go now, before I forget, just one small thing. While we were still talking about the economy and Mr. Modi. Yes. अब यहाँ पर आप मुझे भक्त कह लीजिए, संगी कह लीजिए, जो भी कहना हो कह लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं. The fact is, according to a survey carried out by the World Bank and by the IMF, yes, and a study carried out by various financial institutions all over the world, there is every possibility that by 2047, India might well become the largest economy in the world. There is a possibility. Yes. That we might be neck and neck with both the United States and China. There is every possibility that that might happen. बिल्कुल. क्योंकि अगले 3 या 4 साल में आप जर्मनी के आगे निकल जाएंगे. बिल्कुल. आज की तारीख में you are the 4th largest economy in the world, yes, after Germany. Of course. और जर्मनी के आगे निकलने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हिंदुस्तान को. बिल्कुल. और all that has come about, irrespective of whatever people might say, all that has come about because of the dynamism, passion and pride shown by the Prime Minister Narendra Modi. इसके पहले आज की तारीख में कोई गर्वान्वित नहीं होता था इस प्रकार, yes, हिंदुस्तानी होने पर. बिल्कुल. क्या आई एम एन इंडियन? Yes. सीधी सादी बात है. Yes. और जहां तक के हिंदुस्तान का सवाल था, it is only after the coming of Mr. Modi that you had people like Sushma Swaraj, that you had even anybody, any small little consulate anywhere in the world ready and waiting to help any expatriate Indian in that particular country. And every ministry fulfilling to its full potential. Yes. अब यहाँ पर leadership, that's the effect of a great leadership. और यहाँ पर हमारे कांग्रेस माइंडेड जितने भी लोग हैं, वैसे एक चीज़ आपको बता दें, हमारे खुद के पिताजी खुद कांग्रेस में हुआ करते थे. लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आप कहते हैं मनमोहन सिंह के वक्त ये हुआ, इंदिरा जी के वक्त ये हुआ, उसके वक्त ये हुआ. अरे भैया, जो लोगों की हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती थी लंदन जैसे शहर में कि हाई कमीशन में, हिंदुस्तानी हाई कमीशन में कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, विंडो बंद हुआ करती थी, बोलते थे वापस आओ. It was exactly the way government was run over here. All the clerks over there used to say, get lost, we are not here for you. आज की तारीख में कोई करके देख ले. Now, sir, the External Affairs Ministry are available on Twitter. That's right. You have a problem, you tweet to them and yes, you get a response. Absolutely. And that is the greatest thing, that revolution. In fact, whenever... Just the other day, sir, yes, I was watching both Mr. S. Jaishankar and our Petroleum Minister Hardeep Singh Puri's interview on CNN. Bilkul. The manner in which he spoke on CNN and the manner in which he took down that CNN anchor was a great matter of pride for all of us. Bilkul, that here is a minister who is actually stating India's position the way it ought to be stated, in a very assertive, very straight and upfront manner, where he said, effectively he told her, India is not going to be bullied by anybody. Absolutely straight. Hindustan का हित उसी में है जिसमें हिंदुस्तानियों का हित है. Exactly. I have 1.34 crore people. That is 1.4 billion people that I have to look after. And their benefit, what is good for them, is the uppermost in our minds. It's uppermost in our mind. And what benefits them is all that we are concerned with. We are not concerned with anything else. That's it. And the other thing that he also said to her and to the CNBC international anchor also, the same thing. The CNBC anchor was by the way far more sympathetic towards India and far nicer. But in so far as CNN was concerned, what he told her was very, very telling, Pradeep ji. He says what we buy from Russia in 3 months, in a quarter, is what Europe buys from Russia in about an hour. एक घंटे में जितनी गैस यूरोप खरीदता है, उतनी गैस हम रशिया से शायद 3 महीने में खरीदते हैं. तो पहले आप यूरोप से बात करें ना. बिल्कुल. कि आप जो हैं, वो जरा बंद कीजिए. मेरा ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इतना जवाब दे रहा है. एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी. बिल्कुल. And nobody is scared. Everybody is assertive. See, इसके पहले तो हमारे मंत्रियों के मुंह नहीं खुलते थे. बाहर जब जाते थे,
इंटरव्यू देने से कतराते थे. In fact, the Pakistani ministers, by the way, used to be far more articulate and far more assertive in stating their positions than us. Yes. And the way Jaishankar has actually run down everybody, given a lesson in the history of Kashmir to everybody is really and truly something which needs to be applauded by everybody. As he said, the Kashmir mess was used by all over the world, by people all over the world, which is no longer a mess. There is no 370, there is no special status, there is no nothing. Kashmir is part of India. Thank you very much. Good morning. A few days earlier, you were discussing with Rajnath Singh that we are going to take over Pakistan. That is the only unfinished business of partition, by the way. And then you had Shahbaz Sharif rushing to China. Yes. And giving a joint statement with China that if we will not allow any kind of aggression or reclaiming of any territories from any person where Pakistan is concerned, though the kind and who's saying this, by the way? Let me point out to you who's saying this. It's the Pakistani Prime Minister who's saying this. And who is this Pakistani Prime Minister? He is from a long line of Prime Ministers who have actually sold off part of Pakistan occupied Kashmir to China. Yes. जैसे जमींदार होते हैं ना, जब जमींदारों के पास पैसे खत्म हो जाते थे तो वो बोलते थे ये पट्टा जो है ना, ये जमीन का टुकड़ा जो है फलां फलां को बेच दो, साहूकार को बेच दो. इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तथाकथित तौर पर आजाद कश्मीर ये लोग बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना को बेच दिया है. बिल्कुल बेच दिए. And they are talking about what? That they will protect the integrity and sovereignty of their country. You yourself have sold the sovereignty of your nation. Can you imagine any other country anywhere in the world, the smallest country in the world, will never sell off part of its country? आपने अपनी जमीन बेच दी. Exactly. हद होती है. So here what we find is the BJP is in aggressive mode. Their statements are totally, it builds sentiments among the entire countrymen, pride among the countrymen. That's right. They are doing. So if Congress has to topple the apple cart, it has to come something very seriously when national security is concerned, when nationalism is concerned. There should be no compromise on that. There is no compromise on that. That's there right. cannot be any compromise. You cannot have a compromise on that. And any government who is compromising on national security, on nationalism, will pay the price. Now, just because the Coimbatore blast में just because चल रहा है. Now you find the ISIS link, you find the jihad out there, you find kind of materials which NI is investigating. And I think Stalin understood that. जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुरंत NI को hand over कर दिया investigations, because you cannot compromise nationalism, you can't compromise national interest where these things are concerned. Because I remember Musharraf saying that the entire South India is infested with our people. Yes, that's right. That's what he said. Sleeper cells. Yes, that's what he said. These are activated. Now, you have to. Every political party has to believe one particular thing, that terrorism has no religion. So, if anybody is caught, it has got nothing to do with religion. And nothing to do with politics. Nothing to do with. And if you do it, like here, when Uddhav Thackeray had a little bit compromise where national issues were concerned, a little compromise where Savarkar was concerned, a little compromise where, anything to do with Hinduism is concerned, Hindutva is concerned, you saw it suffering. You saw it. It was very easy for anybody to break the party on issues. Yes. And people could break the party on issues. That's right. Saying that we are with nationalism, we are with Hindutva, we are with Savarkar, we are with Chhatrapati Shivaji Maharaj. So, आपको इस सेंटिमेंट को दूर रहकर I don't find this 20% जो national इनके वोट शेयर है वो कैसे consolidate करेंगे? नहीं करेंगे. समझ में नहीं. Which is the reason why they are out of the reckoning in Gujarat. They are reckoning. Because Gujarat mein, they are not even in the reckoning. They are not in the reckoning. Indira Gandhi's Congress. Yes. Just you always say, only Rahul Gandhi has to remind the people that we were the people who won the 1971 war. We disintegrated Pakistan into two. Yes. That is a pride for every Indian. But he never mentions it. He doesn't mention that. Maybe he's ashamed of his grandmother. We don't know. He's forgotten about that. Yeah. So, but you need, the Congress has to inspire itself with these kind of things when nationalism is concerned, where national security is concerned. Because 2008 इसके पहले क्या आप आगे बढ़ें? एक मिनट. नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और बाकी जो बीजेपी है उन्होंने क्या किया? सरदार पटेल को अपना लिया, बिल्कुल, भगत सिंह को अपना लिया, राजगुरु को अपना लिया, सुखदेव को अपना लिया और महात्मा गांधी को अपना लिया. मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले साल तक इंदिरा गांधी को भी अपना लें.
क्योंकि आपने तो इंदिरा गांधी के सारे आइडियल्स को छोड़ दिया। You have forgotten Indira Gandhi, you have forgotten Mrs. Indira Gandhi. Mr. Rahul Gandhi and the rest have forgotten what Mrs. Indira Gandhi stood for. Mrs. Indira Gandhi, above all, was a total dedicated nationalist. Bilkul. Her politics may have been whatever, yes, but she was one person on where she used to say there can be no compromise on nationalism. Please do remember, it is under Mrs. Gandhi's regime that we were able to take over the entire Saichen. Exactly. So, no, you can't compromise on that. That was and the Congress is compromising on that. I am shocked. Yes. I am not only shocked, I am disturbed. What is the matter with you people? Are you Indians or what? Pradeep, you have to, sir. Patriotism, nationalism, Hindutva ko aap fir bhi apnaye, because aapko today the entire nation believes that jo policies hai, Hindutva is an agenda. Modi has set the agenda of Hindutva. You can't move out from here. You find the same place in Maharashtra. You are finding the same thing in Tamil Nadu. Dhire dhire wo and in the northeast. And the northeast. Everywhere. Yes, everywhere. You can't move along with. And I think Rahul Gandhi is beginning slowly to understand it. But फिर वो compromise आते हैं. Digvijay Singh comes into the picture. Various elements come to the picture. And तो इस चीज को आप now how are you going to redefine yourself when national security is concerned, where nationalism is concerned, where patriotism is concerned? Because most of the Indians believe in the patriotism of Modi, in the nationalism of Modi, in the total devotion when national security is concerned of Mr. Modi. After the 26/11 and 2008 episodes, people have got a kind of mental block where the Congress is concerned, yes, because they don't know whether it's going to perform. Because उसके बाद जिस प्रकार से मनीष तिवारी ने किताब निकाला 26/11 attacks के, बोले कि we should have attacked immediately. We should have attacked immediately. We should have had to. What he said was we should have taken retaliatory action immediately. We didn't. Could something to. It was demoralizing for everybody, for every Indian. कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या इतने कमजोर हो गए कि हमारे घर में आकर के ताज होटल में घुस करके, ओबरॉय होटल में घुस करके, सीएसटी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में घुस करके, कामा और ऑलब्लेस हॉस्पिटल के अंदर घुस करके लोग गोलियां चला के, गोलियां बरसा करके शबद हाउस में, यस, यहूदियों को ढूंढते हुए हमारे देश में, हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तानियों को मार के चले जाएंगे और बाकी जो हमारे गेस्ट हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, उनको मार के चले जाएंगे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने हाथ मलते रह जाएंगे और ये कहेंगे हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं. क्या मतलब हुआ ये? एंड दिस जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का मुंबई में जो समिट हुआ था, उसमें जिस प्रकार से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सेड दैट एवरी टेररिस्ट अटैक एंड एवरी पर्सन किल्ड account will be held. The person who doesn't will be accountable, and India will hold them to account. Yes, that was a very aggressive statement, never before by anybody. It shows India's will and India's resolve that the perpetrators who are in Pakistan will meet some justice, will be brought to justice. They will be there. In some form or the other. In some form or the other. And by the way, before we go, some very good news again for Mr. Modi. Mr. Modi's friend Benjamin Netanyahu has come back as the Prime Minister of Israel. Very dear friend of Mr. Narendra Modi. So all of Mr. Modi's friends are now in place, except for the United States President, Mr. Joe Biden. And we don't really know, and in fact, as the Americans themselves say, they don't really know what Mr. Joe Biden is up to. But of that, we'll discuss it tomorrow. For the moment, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में फिलहाल इतना ही. आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम.